हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे CSEET नवंबर 4 नवंबर वाले पेपर की करंट अफेयर्स की तैयारी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वन शॉट ऑन आवर चैप्टर नंबर 4 जो कि है लीगल एंड अदर अफेयर। वन शॉट की अगर अपन बात करें ना बेटा, तो वन शॉट के इतिहास में शायद इससे छोटा कोई भी चैप्टर हमारे लिए नहीं होगा। तो आइए चौथे लेक्चर को अपन करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। मेरे को तो बीइंग अ लॉयर आल्सो, मेरे को तो ये वाले जो चैप्टर है ना वैसे भी दिल के बहुत ज्यादा करीब है। क्यों? यहां पे हम पढ़ेंगे रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किसने किया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किए, हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किए या ट्रिब्यूनल। जब हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं तो कौन कौन से वो ट्रिब्यूनल है जो हमें दिमाग में रखने हैं भाई? आपको रखना है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आपको ध्यान में रखना है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ITAT और GST। ठीक है, GST के लिए वैसे अभी तक कोई मामला साफ है नहीं, तो GST रिलेटेड कोई भी नया आपको अगर पता, जैसे ऑनलाइन गेमिंग पे 28% लगा है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने किया है और ये आपके लिए आएगा, इसको मैं लेके जाऊंगा। लेकिन जब मैं बुलेटिन्स की बात करूंगा तब मैं इनके बारे में बात करने वाला हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इनकी बातें कर रहे हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट, अपील करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट बोलते हैं अपीलेट, अगर आप समझो अपील कर सकते हो, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए, रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पास बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो यार कुछ चीजें, क्योंकि MCQ है तो अपने को पढ़ना पूरा का पूरा पड़ेगा। पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। मतलब इसके ऊपर एक आदमी, एक नॉर्मल सिटीजन, तो यार इसके ऊपर कहीं नहीं जा सकता। मैं नॉर्मल सिटीजन के लिए क्यों बोल रहा हूं कि सर हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी है, लेकिन सरकार के पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे भी दिया और सरकार उस जजमेंट से खुश नहीं है, तो उसके पास तरीका है कि वो सदन में, लोकसभा राज्यसभा में बिल या एक्ट या ऑर्डिनेंस पास करवाकर उस जो जजमेंट है उसको रिवर्स कर सकती है। इतिहास गवाह है, ऐसा कई बार हुआ है। तो आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वैसे एक नॉर्मल सिटीजन के लिए हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का पावर का क्या मतलब होता है? जो जजमेंट्स नीचे के कोर्ट ने दिए हैं, हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, उनके जजमेंट्स को भी ये रिव्यू कर सकता है। पावर और कौन सी मिल रही है इनको? जुडिशियल रिव्यू की पावर मिल रही है। इंडिया क्या स्टेट है भाई? इंडिया इज द फेडरल स्टेट एंड हैज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विथ 3-tier स्ट्रक्चर। 3-tier स्ट्रक्चर कौन कौन सा 3-tier? सर सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सेशन कोर्ट्स वगैरह जो होते हैं जिनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5th द यूनियन एंड चैप्टर 6 ऑफ द यूनियन जुडिशियरी। आर्टिकल 124 to 147 in part 5th of the constitution deals with the organization, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल्स में लिखे गए हैं? सर 124 से लेके 147 जो आर्टिकल है किसके? पार्ट 5 के, हमारे भारत के संविधान में। उनमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या बात है कि सर उसका कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता कैसे मेंटेन रहेगी, जुरिस्डिक्शन पावर क्या क्या है और प्रोसीजर्स, प्रक्रिया क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में फॉलो होती है। ये सारी 124 से 147 पार्ट 5 ये याद रखने वाली चीज है। फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124(1) states that there shall be a supreme court of India constituting of a chief justice of India। क्या है अभी हमारे? कौन है, क्या नहीं, कौन है हमारे चीफ जस्टिस? DY डैश। ठीक है, पॉज कर दो और जल्दी से मेरे को लिख के भेज दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो कौन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड
until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 judges. देखो अभी तक not more than 7 judges, जब तक पार्लियामेंट इसको बदले नहीं तब तक तो मैक्सिमम कितने होंगे, 7 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, along with Chief Justice of India. The jurisdiction of Supreme Court of India can broadly be categorized into original jurisdiction. 3 जो jurisdiction है, आओ देखो. एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब खुद ही ये इनकी तरफ केस जाता है और ये खुद उस पे संज्ञान लेते हैं. एपेलेट जुरिस्डिक्शन, नीचे के कोई कोर्ट से कोई बंदा त्रस्त है, ठीक है, और वो उनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आता है. और आखिरी है एडवाइजरी, ठीक है, जुरिस्डिक्शन. 3 तरीके के जुरिस्डिक्शन. एमसीक्यू में बहुत आराम से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है. तो भाई ओरिजिनल है, एपेलेट है एंड एडवाइजरी है. हाउएवर देयर आर अदर मल्टीपल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 3 जुरिस्डिक्शन के अलावा भी. ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019, ये एक बिल फेयरली रीसेंट बिल है, has strengthened the number of judges in the Supreme Court. It has increased the judicial strength from 31 to 34 including the Chief Justice of India. तो भैया बढ़ के स्ट्रेंथ कहां पे हो चुकी है, 34 की हो गई है. और इस 34 के अंदर जी हां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड होते हैं. ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8, क्योंकि 7+1 हो गया था जो अभी अभी अपन ने ऊपर बढ़ा था, ये तो ओरिजिनली था, ठीक है. 1 चीफ जस्टिस 7 अदर. पार्लियामेंट ने इसको 31 तो पहले ही कर दिया, 34 अब हो चुका है. द पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू रेगुलेट देम. द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. क्यों? इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, इंडिपेंडेंस, ताकि कोई सरकार इनको अफेक्ट नहीं कर सके, इसीलिए इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है. द सीजेआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन with such judges of the Supreme Court and High Court as he deems necessary. इसको कलोजियम बोला, कलोजियम, ठीक है, कलोजियम नहीं कलोजियम जो होता है वो बोला जाता है. इस कलोजियम ऑफ जजेस से बात करके प्रेसिडेंट सीजीआई का अपॉइंटमेंट करता है. द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन बाकी जज सीजीआई का अपॉइंटमेंट के लिए कलोजियम हो गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस का. और एक बार सीजीआई अपॉइंट हो जाता है तो बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन फिर सीजीआई से पूछ के, बार बार कलोजियम में नहीं जाएगा. Other judges are appointed by the president after consultation with the CJI and such other judges of the Supreme Court and High Court as he deem necessary. The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of judge other than the CJI. ठीक है, obligation है, करना ही पड़ेगा. Presently, अरे नहीं मत बताओ सर, ये तो मैंने बच्चे से पूछा था. Presently, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud is the Chief Justice of India. यहां पे एक करंट अफेयर के एक सवाल है, क्या चीफ जस्टिस जो इंडिया के अभी हैं डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके फादर भी एक जज थे या नहीं, ये आप मुझे बताओगे. और जी नहीं, इनका जो एक बॉलीवुड के एक्टर है, ठीक है, विद द सेम सरनेम, उनसे कोई संबंध नहीं है. हाई कोर्ट इन इंडिया के बारे में बात करें. इंडिया इज अ कोहेसिव जुडिशरी. इंडिया इज अ कोहेसिव जुडिशरी सिस्टम एंड द सुप्रीम कोर्ट तो भाई सबके ऊपर है, इज द एपेक्स कोर्ट. द हाई कोर्ट इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट. ठीक है, मतलब सर जी हां, आप सही समझो, हर स्टेट की एक हाई कोर्ट होगी. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214, each state of India shall have a high court. It is the final interpreter of the constitution, final interpreter of the Samvidhan. Article 215 and 26 of the constitution, Indian constitution state that every high court shall be a court of record and shall have the power of such a court, including the power to punish for contempt of itself. तो अगर तुमने हाई कोर्ट की तौहीन की तो भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर कर देंगे. एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस, ठीक है, एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट. देयर आर फॉलोइंग 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. तो सर स्टेट्स तो ज्यादा हैं. 3 having control over more than one state. 3 having control over more than one state.
दिल्ली हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन अमंग यूनियन टेरिटरी, ठीक है, दिल्ली बिल्कुल सेंटर के अंदर आता है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन स्टेट भी है, तो इसका एक अलग से हाई कोर्ट है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बेटा इतिहास के हिसाब से अगर देखें तो बहुत फेमस जजमेंट्स आए हैं, तो इसकी एक रिस्पेक्ट अलग है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट झारखंड, मणिपुर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मेघालय, सिक्किम, बॉम्बे, गुवाहाटी, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, कैलकाटा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पटना, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरीज, मद्रास, पंजाब एंड हरियाणा शेयर कर रहे हैं उत्तराखंड, ठीक है। नाम क्यों पढ़ लिए सर? क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया और हो सकता है ये सुनकर, नाम सुनकर तुम्हें कुछ चीज याद आ जाए। फिर तीसरे टॉपिक पे इस पे आते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो द इनेक्टमेंट, अब कौन सा कानून लग गया इन पे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट इन 1985 opened the new chapter in the sphere of administrating justice to the aggrieved government servant। मतलब ये वाले जो ट्रिब्यूनल्स है ये किसके प्रति बने हुए हैं सर? गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, जो दुखी हो जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए है ये ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट owes its origin to Article 323A of the Constitution, which empowers central government to set up by an act of Parliament administrative tribunal। तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन सेटअप करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर adjudication of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of services of person appointed to the public service and posts in connection with the affairs of the union and state। तो जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार के जो सरकारी कर्मचारी है, उनके चाहे हायरिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, या उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी सर्विस के दौरान उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, गलत तरीके से फायर कर दिया, प्रमोशन रोक दिया, इन पे बहुत नाटक है और इतनी केसेस इनके पेंडिंग रहते हैं ना, इन सबको सलटने के लिए अलग से ये ट्रिब्यूनल बना दी गई है। In pursuance of the provisions contained in the Administrative Tribunal Act 1985, the Administrative Tribunal set up under it exercise original jurisdiction। तो यहां पर भी एक चीज ध्यान रखने की है, इसकी भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस मैटर्स ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड बाय इट। कौन से एम्प्लॉइज? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज। एज अ रिजल्ट ऑफ द जजमेंट डेटेड 18 मार्च 97 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, the appeal against the order of an administrative tribunal shall lie before the division bench of the concerned high court। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई साहब अगर कोई ऑर्डर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने दिया उससे जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो संतुष्ट नहीं है, तो उस ट्रिब्यूनल, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के प्रति वो कहां पे अपील कर सकते हैं? पहले तो, अरे बाप रे लग गई, पहले तो कहां पे अपील कर सकते हैं? वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मतलब 3 टियर ज्यूरिसडिक्शन आ ही गया, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, जोर की लगी है क्या? दर्द तो जोर का हो रहा है। हाँ चलो देखा, बहुत जोर की नहीं लगी, थैंक गॉड ये वाला हिस्सा नहीं था पेन का, है ना। तो नहीं तो अंकित सर भी वो निक फ्यूरी हो जाते। निक फ्यूरी जानते हो क्या कौन है निक फ्यूरी? और अगर जानते हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। पॉज करो और बताओ। चलो आ जाओ। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजेस jurisdiction only in relation to the service matter of litigants covered by the act। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। The procedural simplicity of the act can be appreciated from the fact that aggrieved person can also appear before it personally। मतलब लॉयर की जरूरत नहीं है। ये एक शानदार चीज है कि aggrieved person can appear personally। The government can present its case through its departmental officer or legal practitioner। Thus, the objective of the tribunal is to provide for speedy and inexpensive justice to the litigants। अच्छी बात है। The act provides for establishment of Central Administrative Tribunal, CAT, Central Administrative Tribunal, and State Administrative Tribunals। The act was set up on 1st November 1985 and there are 17 benches and 21 circuit branches in the Central Administrative Tribunal। 17 तो प्रॉपर बेंचेस है और छोटे छोटे सर्किट बेंचेस भी हैं
21 all over India. In addition to the ministries and departments of central government, the government of India has notified about 214 organizations under section 14(2) of the Administrative Tribunal Act 1985 to bring them within the jurisdiction of Central Administrative Tribunal. तो 214 ऑर्गेनाइजेशंस भी इनको हेल्प करती है, क्योंकि एम्प्लॉय भी तो इतने सारे हैं ना यार. तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या याद रखेंगे? एक तो सीएटी हो गया, उसके अंदर 17 बेंचेस एंड 21 सर्किट ब्रांचेस हो गए, और उसके साथ साथ 214 ऑर्गेनाइजेशन हो गई. तो ये चीज ऐसे याद रखोगे बेटा. एक तो ये हो गई सीएटी, उसके बाद 17 17, फिर 21 आपकी सर्किट ब्रांच. ठीक है, 1 17 21 214. एक इसको मार्क कर लेते हैं यहां पे. एक तो सीएटी हो ही गया, ठीक है. फिर 17 21 214, ठीक है. विद इन द, ठीक है. In addition to the Central Administrative Tribunal, principal bench is dealing with the matters of government of National Capital Territory of Delhi. चलो, फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में आओ बात करते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूट एनसीएलटी. अब सीएस के बच्चे हो यार, तुम लोग का एनसीएलटी का नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो अभी एग्जीक्यूटिव में आओ तो सरी, इसके बारे में इतनी बातें होने वाली है, ठीक है. तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ये 408 वाला जो सेक्शन है बेटा, ये आप है ना जो एकदम प्रोफेशनल है वहां पे पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव में भी शायद पूरा नहीं पढ़ाएंगे 408 तक. 18 ऑफ ये तो ठीक है. विद इफेक्ट ऑफ 1 जून 2016, इन द फर्स्ट फेज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर हैज सेट अप. कितने बेंचेस सेटअप की? एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कितने बेंचेस सेटअप की? 11 बेंचेस, 1 प्रिंसिपल बेंच. 11 बेंचेस के साथ साथ 1 प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली एंड 10 बेंचेस एट न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata, Mumbai. These benches will be headed by the president and 16 judicial members and 9 technical members of different locations. Subsequently, the NCLT at Amravati, Cuttack, Indore, Jaipur and Kochi has also set up by the government. Presently, Chief Justice retired Ramlingam Sudhakar is the president of NCLT. नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? पहले एनसीएलटी की बात की, अब एनसीएलटी के ऑर्डर्स के प्रति अगर किसी को अपील करनी है तो एनसीएलएटी आ गया है. वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016. एनसीएलटी इज आल्सो द एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय एनसीएलटीज, जो इतने सारे हैं ना बेंचेस, अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. तो यहां के जो नाटक होंगे वो भी एनसीएलएटी हैंडल करेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 December 2016. एनसीएलएटी इज आल्सो द एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अंडर सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ द आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. NCLT is also the appellate tribunal to hear and dispose of appeals against any directions issued or decision made or orders passed by the Competition Commission of India. As per the amendment brought to the section 410 of the Companies Act 2013 by section 172 of the Finance Act 2017. Or NCLT appellate tribunal to hear and dispose against the NFRA. एनएफआरए से अगर कोई त्रसित है, दुखी है, तो वो भी इसके पास जाएगा. तो भाई एनसीएलएटी किस किस की अपील सुनेगा भाई? सबसे पहले सर एनसीएलटी की अपील तो सुनेगा ही सुनेगा. उसके अलावा आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की अपील सुनेगा. उसके अलावा
CCI की अपील सुनेगा, उसके अलावा NFRA, इन सभी के प्रति से कोई भी अग्रीव्ड है अगर, तो वो किसके पास जा सकता है भाई? वो जा सकता है NCLAT के पास। ठीक है, चलें आगे। एग्जाम में इस पे सवाल बनने का, मैं होता तो मैं पक्का ही बनाता। चार सौ दस पे मैं बेटा ये नहीं लिख रहा कि कंपनीज एक्ट क्या है, ये ध्यान ही रख लेना। ठीक है, IBC का ये 172 किसका है? फाइनेंस एक्ट का है शायद। हाँ, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलो टॉपिक फिर है सम रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इसमें बेटा सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स जो होते हैं, अमेंडमेंट मतलब नए अपडेट्स जो होते हैं तुम्हारे एग्जाम तक के, वो यहां पर इसमें से आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड बाय 4:1 मेजोरिटी, मतलब 5 जजेस की बेंच होगी, तो 4:1 की मेजोरिटी द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ऑन डीमोनेटाइज द 1000 and 500 रुपी के नोट्स, डीमोनेटाइजेशन नोट। केस किसने किया था भाई? केस ऑफ विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डीमोनेटाइजेशन गलत है, इस पे केस किया गया था, रिट पिटीशन डाली गई थी। ठीक है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटर एलिया held that the power available to the central government under subsection 2 of the section 26 of the RBI Act cannot be restricted to mean that it can exercise only for one or some series of banknotes and not for all series of banknote। मतलब demonetization सही था, ये 4:1 में ये फैसला सुनाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठीक किया। The power can be exercised by for all series of banknotes merely because on 2 earlier occasions the demonetization exercise was by plenary legislation. It cannot be held that such a power would not be available to the central government under subsection 2 of the section 26 of the RBI Act। मतलब demonetization valid कर दिया गया था। 4:1 याद रखना है बेटा। Subsection 2 of the 26 of the RBI Act does not provide for excessive delegation in as much as there is a inbuilt safeguard that the power has to be exercised on the recommendation of the central board. As such, is not liable to be struck down on the said ground। मतलब ये सेक्शन स्ट्रक डाउन करने के लिए कि ये हटा दो, तो इसको नहीं हटाया गया। The impugned notification dated 8 November 2016 does not 8 नवंबर 2, ये डिमोनेटाइजेशन की डेट याद है ना बेटा? 8 नवंबर 2016। जी हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, 3 दिन बाद मेरी शादी थी। तो ये डेट याद रखना। does not suffer from any flaws in the decision making process। The impugned order notification dated 8 November 2016 satisfies the test of proportionality and as such cannot be struck down on the said ground। The period provided for exchange of notes while the impugned notification dated 8 November 16 cannot be said unreasonable। तो पीरियड जो था cannot be said, जो आपको दिया गया था नोट बदलवाने के लिए, तुम्हारे पास बच गए थे क्या नोट्स पुराने 500 और 1000 के? The RBI does not possess independent power under section 2 of the section 4 of the 2017 Act in isolation of the power of section 3 and 4(1). Therefore, to accept the demonetized note beyond the period specified in notification issued
ठीक है, ये बोला गया था कि भैया और लंबा समय देना चाहिए था, तो ये भी बोला कि नहीं देना चाहिए, चलेगा। डिसीजन याद ये रखना है, अगर याद रखना है कुछ इसमें। द कोर्ट रिजेक्टेड 58 petitions challenging the demonetization and said the decision making process of the government was not flawed. The judgment said that there was consultation between Center and RBI for 6 months, indicating reasonable nexus between the measures undertaken and the objects sought to be achieved, and therefore the demonetization notification passed the doctrine of proportionality. Proportional, ठीक है, 5 जनों में अगर 3 जजेस ये बोल देते कि नहीं गलत है, तो डिमोनेटाइजेशन हो सकता था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिमोनेटाइजेशन का नोटिफिकेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑर्डिनेंस या पार्लियामेंट में बिल पास कराने का अधिकार तो है ही। नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू रिसीव कोविड वैक्सीनेशन, ये भी मजेदार नेक्स्ट, ठीक है, कि वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी। ये तुम लोगों ने वैक्सीन ली क्या? केस नेम जेकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड बी आर गवाई, ये जस्टिस थे, इन्होंने डिसीजन लिया। Bodily integrity is protected under Article 21 of the Constitution of India and no individual can be forced to vaccinated। ठीक है, आपके शरीर में क्या वैक्सीन जा रही है इस पे संपूर्ण अधिकार किसका? आपका। तो कोविड वैक्सीन नहीं लेने पे कोई जबरदस्ती आपको नहीं कर सकता। In this case, a writ petition was filed in the Supreme Court highlighting the adverse consequences of emergency approval of vaccine in India. The petitioner contended that mandates of vaccine in the absence of informed consent as unconstitutional. The petitioner further said that in the writ petition that coercive, जबरदस्ती पकड़ के वैक्सीन दे रहे हैं, coercive vaccination would interfere with the principle of informed self-determination of individual protected by Article 21 of the Constitution of India. The court found the vaccine policy of the Union of India is not unreasonable and arbitrary. However, the court, ठीक है, ये ध्यान रखना, the court held bodily integrity is protected under Article 21 of the Constitution of India and no individual can be forced to be vaccinated. Further, the court observed personal autonomy, ठीक है, निजी संप्रभुता, personal autonomy of an individual involves the right of an individual to determine how they should live their life, their own life, which includes the right to refuse to undergo any medical treatment in the sphere of individual health. People who did not wish to get vaccinated can avoid vaccination. However, if there is a likelihood of such individuals spreading the infection to other people and affecting community health at large, the government can regulate such public health concerns by imposing certain limitation on individual right that are reasonably and proportionate to the object sought by to be fulfilled. तो भी गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है? जबरदस्ती, आपको वैक्सीन नहीं है लेकिन आप लग रहा है कि आप भैया इधर घूम रहे हो उधर घूम रहे हो और फैला रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर भी जबरदस्ती वैक्सीन शायद नहीं दे लेकिन आपको बंद कर सकती है भाई, ठीक है, कि तू निकलेगा नहीं यहाँ पे। द कोर्ट also held restriction on unvaccinated individual is not proportionate, as the court found both vaccinated and unvaccinated individuals to be equally susceptible to transmission of the virus and thus directed the authorities to review the relevant orders and instruction imposing restriction on unvaccinated individual. नया नेक्स्ट केस देख लेते हैं, आइए। नेक्स्ट केस है daughter's right to inherit self acquired property। केस नेम क्या? अरुणाचला गाउंदर वर्सेस पन्नुसमी। बेंच जस्टिस किस की? जस्टिस एस अब्दुल नजीर एंड कृष्ण मुरारी। The legislative intent of enacting section 14(1) of the act was to remedy the limitation of Hindu women who could not claim an absolute interest in the properties inherited by her but only had a life interest in the estate so inherited। मतलब क्या? Who could not claim an absolute interest in the properties inherited by her,
जो उसको अपने माता पिता से मिली उसमें उसका अधिकार है, लेकिन जो उसने खुद ने क्लेम किया. सो इन दिस केस the court had to determine whether before the commencement of Hindu Succession Act the self-acquired property of a Hindu male will devolve onto the daughters upon the death of her father intestate by inheritance, or it will devolve on the father's brother's son by survivorship. तो भैया अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट के पहले की जो प्रॉपर्टी, बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक्ट ने बता दिया, पहले की जो प्रॉपर्टीज है इस एक्ट के लागू होने से पहले के जो प्रॉपर्टीज है, अगर फादर मर गए, ठीक है, तो क्या उनकी डॉटर्स का भी उसमें हिस्सा होगा या उनके भाई के बच्चों और का होगा. इन दिस केस द कोर्ट हैड टू डिटरमाइन वेदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्स, बिफोर, ध्यान रखना बेटा ये बिफोर, क्योंकि बाद की तो दिक्कत ही नहीं है. हिंदू सक्सेशन एक्ट ने बोल दिया कि भाई आगे तो हिस्सा होगा बेटियों का, ठीक है, तो पहले का क्या होगा. द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू मेल विल डिवॉल्व ऑन टू द डॉटर अपॉन द डेथ ऑफ अ फादर इंटेस्टेट बाय इनहेरिटेंस, और इट विल डिवॉल्व ऑन टू द फादर्स ब्रदर्स सन बाय सर्वाइवरशिप. द कोर्ट नोटेड दैट द एंशिएंट टेक्स्ट एंड commentaries written by various learned persons, even judicial pronouncement, have recognized the right of several female heirs, the wives, the daughters being the foremost of them. After analyzing Hindu laws, customs and judicial precedents, the court held that the right of a widow or daughter to inherit the self-acquired property or share received in the partition of a co-parcenary property of a Hindu male dying intestate, intestate मतलब without will, is well recognized not only under the old customary Hindu law but also by various judicial pronouncement. तो बिल्कुल अधिकार होगा पुरानी प्रॉपर्टीज का, हिंदू सक्सेशन एक्ट से पुरानी प्रॉपर्टीज का भी. नेक्स्ट लॉ क्या है आइए देखते हैं. लॉ नहीं, ऑर्डर क्या पास हुआ है, एनसीएलटी का. एनसीएलटी गिव्स अप्रूवल किसके लिए, मर्जर. किसका मर्जर, मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर. कौन से मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर सर, पीवीआर एंड आइनॉक्स, ठीक है. अरे इसमें भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स के मर्जर के लिए. द एनसीएलटी approve the merger of multiplex operator PVR and Inox, the two chains set in separate filing to the stock exchanges. The NCLT Mumbai bench has allowed the proposed scheme of amalgamation between Inox, Leisure and PVR. जी हाँ, इस पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया, ये लेटेस्ट अपडेट है कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओ, ठीक है. फिर पार्लियामेंट passes bill to rename न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर. द पार्लियामेंट हैज पास्ड, क्या बिल है, बिल पार्लियामेंट ने आया है, एनसीएलटी और ने कुछ नहीं बोला. इंटरनेशनल न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को क्या नाम से कर दिया, एज द इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर. The Rajya Sabha passed the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022, which was piloted by Union Law Minister in the House. The Lok Sabha has already passed the bill on August 22, which expands this to include the conduct of other forms of alternative dispute resolution beside arbitration. Bakwas. NCLT allows settlement between McDonald's and former partner विक्रम बख्शी. अरे ये भी बहुत लड़ाइयां हुई थी, तुम लोग को पता है क्या कि मैकडोनल्ड की जो है उसकी फ्रेंचाइजी अगर हम बोलें तो भारत में है ना, जब मैकडोनल्ड एंटर हुआ था तब दो जनों ने ली थी, नॉर्थ और ईस्ट की एक जने ने ली थी, नॉर्थ ईस्ट की, एंड वेस्ट एंड साउथ की जो है उन्होंने एक ने ली थी. हार्ड कैसल का एक नाम है और ये विक्रम बख्शी का ये दूसरा, ठीक है, कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट. जी हाँ, अब बहुत लड़ाइयां हुई थी, ये कनॉट प्लाजा वाला भी हार्ड कैसल वाले ने लिया, इनकी बहुत लड़ाई थी. मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस फूड चेन. तो आ जाओ, एनसीएलटी ने अलाउ किया यूएस फूड मेजर मैकडोनल्ड्स और फॉर्मर एक्सचेंज इंडियन पार्टनर विक्रम बख्शी टू विड्रॉ देयर पिटीशन अगेंस्ट ईच अदर. विड्रॉ कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट, ये विक्रम बख्शी का था लिमिटेड, सीपीआरएल, एंड दूसरा मैंने क्या पूछा था, हार्ड कैसल वाले का. NCLT also dismissed the intervention application filed by HUDCO earlier, opposing the deal. HUDCO has opposed the settlement claim of rupees 195 crore dues from Bakshi and his related entities. CPRL is now wholly owned by McDonald's after its estranged partner Vikram Bakshi transferred his shares in the joint venture to the US firm.
Supreme Court constitutes all women bench to hear transfer petition. So Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has constituted an all-women bench comprising Justice 𝐒𝐿𝐻 Kohli, Bela M. Trivedi to hear transfer petitions involving matrimonial disputes on and bail matters. This is the third occasion in the history of apex court that an all-women bench has been constituted. ये याद रखने की बात है, third occasion है हिस्ट्री ऑफ एपेक्स कोर्ट की ऑल विमेन बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई है. द टू जज बेंच इज currently sitting in the court number 11 of the top court is a all women bench. दो justices कौन? हेमा कोहली and Bela M. Trivedi. The bench has 32 matters listed before it, starting with 10 transfer petition involving matrimonial dispute and followed by 10 bail matters. The first all-women bench was set up in 2013. ये ध्यान रखें. First कब हुई? 2013 में. When a bench of Justice Gyansudha Mishra and Ranjana Prakash Desai was constituted by bench of Justice R. Bhanumati and Indira Banerjee. 2018 में ये benches आई थी. NCLT dismisses Siemens plea against encashment of its guarantee in MEL. ये भी बहुत ज्यादा फेमस केस अभी तक चल ही रहा था यार ये भी. तो NCLT has dismissed an appeal by Siemens Limited against the invocation of its bank guarantee by Meenakshi Energy Limited, which is presently, इसके बारे में शायद हमने करंट अफेयर के एक हमारे सेशन में बात भी की थी डेली करंट अफेयर में. तो MEL, which is presently facing insolvency proceeding, was setting up a 700 megawatt thermal plant in which Siemens was a subcontractor for the project. The appellate tribunal has upheld the earlier order of the Hyderabad bench of the NCLT in this regard and noted that bank guarantees were invoked by MEL on the ground that Siemens failed to perform its obligation in terms of the agreement. Also, keeping in view that we do not find any material on record with respect to any fraud, we do not find any illegality and infirmity in the order of NCLT set. तो मतलब ये मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड ने जो बैंक गारंटी इन्वोक की कि सीमेंस ने जो बैंक गारंटी इनको दी थी वो सीमेंस पैसा नहीं दे रहा था, इन्वोक कर ली, फिर सीमेंस ने बोला गलत किया तो एनसीएलटी ने बोल दिया कि कोई गलत नहीं किया. The resolution professional of MEL has sought permission for the release of rupees 2.50 crores and permitted to be utilized against the overall outstanding amount of rupees 13.06 crores to ensure MEL plant is kept running. On this, NCLT having regard to all the aforesaid reason, we hold that the amount may be utilized for functioning of the corporate data as the going concern. तो इनको डे टू डे काम के लिए पैसा चाहिए था, तो ये पैसा इंसॉल्वेंसी आर्बिट्रेटर ने यूज कर लिया. Then power to admit insolvency application not binding even when debt owed. ये भी इंपॉर्टेंट चाहिए सर. In a breather to defaulting companies, Supreme Court held that there is a provision that the provision to admit an application starting the insolvency process is not binding even when a debt is owed. The appeal was filed by Vidarbha Industries, which is power generating company, against the order of NCLAT. तो NCLAT का ऑर्डर को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑर्डर मान्य नहीं होगा. NCLAT had refused to stay the insolvency proceedings started by Axis Bank against the company. A bench comprising of Justice Indira Banerjee and J.K. Maheshwari said the adjudicating authority NCLT failed to appreciate that the question of time-bound initiation and completion of corporate insolvency resolution process could only arise if the companies were bankrupt or insolvent or not otherwise. तो अगर companies bankrupt or insolvent नहीं है, ठीक है, तो आप इन पे ये insolvency professional को नहीं लगा सकते. Moreover, the timeline starts ticking only from the date of admission of the application for initiation of CIRP and not from the date of filing it. Appellate Tribunal has also fell in error in holding, मतलब NCLT ने भी गलत किया and NCLAT ने भी गलत किया,
in holding that once it was found that a debt existed and a corporate debtor was in default in payment of such a, there would be no option to the adjudicating authority but to admit the petition under section 7. तो ऐसा नहीं है. चलो नेक्स्ट है करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आईसीएसआई. देखिए आईसीएसआई रिलेटेड क्या क्या बदलाव हुए हैं. So, the Institute of Company Secretaries of India is the only recognized professional body. एक सेकेंड इसको हाईलाइट करें. Only recognized, ICSI is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. It is a premier national professional body set up under an act of the Parliament, the Company Secretary Act 1980. ICSI आप इस एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा. ICSI functions under the jurisdiction of MCA, Government of India. The institute provides top quality education to the students of the company secretary's CS course and best quality set standards to CS members. At present, there are, ये तो पढ़ा हुआ है, तुम लोग को याद आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ है, more than 70,000 members and around 2.5 lakh students on its roll. बिल्कुल पढ़ा हुआ है ये. Headquarter वापस से Delhi, 4 regional offices in Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai, 1 ICSI Center of Corporate Governance, Research and Training, Navi Mumbai, and 1 Center of ICSI Center of Excellence, Hyderabad, and 72 chapters across India. ICSI has been contributing to the initiatives of the Government of India that have potential to excel the social economic growth. ठीक है, ये सारी चीजें तुम लोग को ऑलरेडी पता है, पहले पढ़ चुके हैं. ये भी पता है आईसीएसआई न्यूज में न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन? CS मनीष गुप्ता प्रेसिडेंट, CS बी नरसिम्हन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई. नाम पता होने चाहिए. सेलिब्रेशन ऑफ 50th नेशनल कन्वेंशन, ये भी पहले ही पढ़ लिया था. तो आईसीएसआई ऑर्गेनाइज एवरी ईयर एन एनुअल मेगा Congression of Company Secretaries, National Convention of Company Secretaries, to deliberate on the national and international development in the corporate and industry arena, topics of national importance, social and cultural issues, exemplify the role of professionals in carrying forward the legacies of systems, processes aligning with the growth mantra. ये सब डिस्कस हुआ. The Golden Jubilee National Convention, इसके बारे में पहले भी पढ़ा है वापस से, of Company Secretaries was organized from September 1 to 3, 22 at Kolkata, West Bengal on the theme Company Secretary of Vishwaguru in Governance and Sustainability, which has already explored the renewed role and responsibility of CS in response to the changing dynamics of the regulatory environment. Some of the key ICSI initiatives unveiled during the convention are, क्या हुआ? एक तो नया कन्वेंशन सेंटर बना कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग का नवी कोलकाता के अंदर. आईसीएसआई which has Eastern India Regional Council in Kolkata is coming with a new CCGRT in Rajarhat New Town, Kolkata. Rajarhat. This would be one of the most important training premises on infrastructure of ICSI. This would greatly benefit the CS members and students. ICSI has also an academic connection with students through MOU with different universities and institutes including IIM, and conducts various programs and courses that impart skills and increase their employability. New ICSI syllabus, ये तो तुमको पता ही है भाई, नया नया syllabus आता ही रहता है. तो ICSI formally launched a new ICSI syllabus which is in sync with the new education policy 2020 of the government. The new syllabus would be effective from 23 onwards. ICSI has factored in over 5,000 feedbacks and suggestions from the general public while drafting the new syllabus. Bhaiya Canada, ICSI Overseas Center in Canada. अभी पंगा चल रहा है. हाँ. The ICSI formally announced and virtually launched a new overseas center in Canada. This would be the 6th ICSI Overseas. ये ध्यान रखना. 6th ICSI Overseas Center in after Australia, Singapore, UAE, USA, UK के बाद Canada. The ICSI team will go to Canada by end of 22 to formally inaugurate the center.
The ICSI Overseas Center caters to the needs of overseas students and professionals. ICSI International Alternate Dispute Resolution Center. The institute formally announced the launch of its own ADR center at National Convention. Arbitration, mediation, conciliation, negotiation are parcel of ADR. चार चीजें arbitration, mediation, conciliation and negotiation ADR में address किया जाता है commercial dispute का. New company has been incorporated for this purpose. ICSI will start a pilot project from Hyderabad and has the full support and guidance of the Ministry of Law, and the mandate is to open 20 such ADR center across India. खोले जाएंगे. ICSI West Bengal government MOU on MSME. ICSI is getting up to sign an MOU with the West Bengal government to provide services to the MSME. ये तो बकवास है. Current update on environment, biodiversity, climate change and sustainable development. आइए देखते हैं इनमें क्या बदलाव हुआ है. तो topic, the Energy Conservation Amendment Bill 2020 to December 13, 2022. The Energy Conservation Amendment Bill 22 was introduced in the Lok Sabha on August 3, 22 and was passed on August 8, 22. The Rajya Sabha pass ने भी 12 दिसंबर को पास कर दिया. मेन चीज क्या है जो हमें एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग. तो भाई कार्बन एमिशन जितना कम होगा उसे क्रेडिट मिलेंगे, उसको ट्रेड कर सकते हो सरकार की स्कीम्स और में. द बिल एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम. सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑथराइज्ड एजेंसी में इशू कार्बन credit certificates to entities registered and compliant with the scheme. The entities will be entitled to trade certificates. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. Any other person may also purchase a carbon credit certificate on a voluntary basis. Obligation to use non-fossil source of energy act empowers the central government to specify energy consumption standards. The bill adds that the government may require designated consumer to meet a minimum share of energy consumption from non-fossil sources. Different consumption threshold may be specified from different non-fossil sources and consumer categories. Standards for vehicles and vessels. ये important है भैया, इसकी वजह से बहुत तकलीफ है. Under the Act, the energy consumption standards may be specified for equipment and appliances which consume, generate, transmit and supply energy. The bill expands the scope to include vehicles and as defined under the Motor Vehicle Act 1988 and vessels. तुम लोग को पता है क्या अभी भारत स्टैंडर्ड कौन सा चल रहा है? तुम्हारे व्हीकल कौन से अभी BS 4, 5, 6, 7 कौन सा चल रहा है? ये बताना मेरे को पॉज करके. Composition on the Governing Council of BEE. The Act provides for the setting of Bureau of Energy Efficiency. इन्होंने इन BEE certifications आते हैं आजकल इसके. फिर United Nations Conference of Parties, December 1922. The interministerial delegation from India attended the 27th session of the Conference of Parties, COP27, to the UN Framework Convention on Climate Change. G20 पे भी हमने इस पे बहुत बात की थी. The parties at the conference came together to advance on global collective action on mitigation, adaptation, loss and damage, climate finance, etc., with a view to achieve the goals under UNFCCC and its Paris Agreement, जिससे US बैकआउट कर गया था. Paris Agreement साइन करने के बाद बैकआउट हुआ था. India emphasized the necessity to adhere to the principle of UNFCCC and Paris Agreement, which include inter alia equity, principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, and that developed countries must take lead in climate action as well as provisions of the climate finance technology transfer. Bakwas. The effort was undertaken to jointly with several other developing countries, and ये भी एग्जाम के लिए नहीं important, लेकिन ये है. As a consequence, the principles are reflected extensively in the Sharm el-Sheikh Implementation Plan and other delegations of COP27. COP27 has been termed as Implementation COP. Major outcomes of COP27 include decision on establishing a loss and damage fund, work program for mitigation, just transaction and climate action in agriculture,
India's efforts included focusing on equity, mainstreaming national circumstances, बकवास zero, हाँ ये है, global peaking net zero and emission reduction targets, supporting fair share of global carbon budget, and for funding arrangements for loss and damage. India's effort also led to inclusion of reference to the need for transition to sustainable lifestyle together. ये भी बकवास. रूफटॉप सोलर सब्सिडी मिल रही है बेटा, पता है तुम लोग को. गवर्नमेंट एक्सटेंडेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम टिल March 26. The rooftop solar program has extended till 31st March 26, and therefore subsidy under the program will be available until the target under the program is achieved. All residential consumers are hereby advised not to pay any additional charges to any vendor on account of fee for application on the national portal. ये waive off किया गया है. Or any additional charge for net metering testing which are not prescribed by the respective distribution company. On the national portal, any consumer willing to install rooftop solar from any part of the country can apply and track complete process starting from registration to release of subsidy into his bank. The subsidy kitni hai? National portal has been fixed at rupees 14,588 per kilowatt for capacity up to 3 kilowatt for entire country, and residential consumers have to install rooftop solar from any one of the vendor registered by the respective distribution company on their locality. The list of registered vendor is also available on national portal. To safeguard the interest of consumer, format of agreement to be signed between the vendor and the consumer has been given on national portal. The terms of agreement can be mutually agreed. The vendor has to provide maintenance service to the consumer for at least 5 years का maintenance भी देना पड़ेगा. And in case of any default, the respective distribution company can encash the performance bank guarantee of the vendor. There is no fee application on the national portal, and also the charges for net metering have been prescribed by the respective distribution companies. No charges, क्या no fees for application, net metering, no charges paid to any vendor or distribution company for receiving subsidy, and subsidy will be credited directly into the bank account of the beneficiary of the ministry. Ministry is implementing rooftop solar program phase 2, wherein CFA or subsidy is being provided to residential consumer for installation of rooftop solar. फिर India embarked on new initiatives in renewable energy in environment minister. तो India has embarked on new initiative in renewable energy, e-mobility, ethanol blend. पता है ना 20% तक जा रहे हैं, 12%, 13% तो हो ही गए, 12%. Ethanol blended fuel and green hydrogen as an alternative energy source, delivering India's national statement at COP27. The Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav, said India submitted its long-term low-emission growth strategy in a year after Prime Minister Narendra Modi's announcement of net zero emission by 2070 at Gaslow. Gaslow जगह है बेटा, वहां पे मोदी जी ने बोला था 2070 तक ले जाएंगे zero. The strategy indicates low carbon pathway in key economic sectors. G20 पे कितना बोला था? गैसलो में 2070 बोला था, G20 में इंडिया नेट जीरो कब तक हो जाएगा? India is undertaking arduous effort despite having less than 4% contribution to the world cumulative emission and 1/3 of global average annual per capita emission. At the center of India's vision of a safe planet is the mantra lifestyle for environment that PM Modi set forth in National Statement COP26. Next, a committee of experts on sustainable finance submits report to IFSCA. तो इन्होंने फाइनल रिपोर्ट दी है, submitted its final report to chairperson of IFSCA on October 3, 2022. The committee chair कौन था? श्री C.K. Mishra, former secretary to Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The committee members comprise of leaders of and experts from the entire sustainable finance ecosystem, including national and international institutions. बकवास बकवास बकवास.
रिलीज ऑफ वाइल्ड चीता इन कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, चीता यहां पे छोड़े गए तो एक्सटेंट जो हो गए थे. रिलीज वाइल्ड चीता विच हैड बिकम एक्सटेंट फ्रॉम इंडिया एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. चीता विच वर बॉट कहां से, नामीबिया से. ये बेटा बहुत हाईलाइट भी हुआ था. नामीबिया से चीता लाए गए थे अंडर प्रोजेक्ट चीता which is world's first intercontinental large wild carnivore translocation project. Out of the 8 cheetah, 5 female and 3 male cheetahs are there. The release of wild cheetah by Prime Minister in Kuno National Park is a part of his effort to revitalize and diversify India's wildlife and its habitat. The cheetah was declared extinct from India in 1952 May. 1952 May. The cheetah that were released are from Namibia and have been bought under MOU signed earlier this year. The introduction of cheetah in India is being done under Project Cheetah, the world's first अरे ए की बात कितनी बार बोलोगे, ठीक है. IBA, key working group of banks on sustainability. So Indian Banks Association has set up large working group comprising of representatives of about a dozen and a half key banks solely for handling issues covering the entire spectrum of sustainability and green financing. Bakwas. Recycling e-waste. So government has taken a number of steps to formalize e-waste recycling. देखें बेटा, blue box, green box देखें. The e-waste management rule 2016 provides for compulsory, ये important, compulsory registration of recycling units, and Central Pollution Central Board has issued guidelines, standard operating procedure for processing e-waste. The e-waste management rules 2016 also provides for recognition and registration, skill development, monitoring and ensuring safety and health of workers involved in dismantling and recycling of e-waste. Under e-waste management rule, provision of reduction of hazardous substances in manufacturing of electrical and electrical equipment (EEE) has been provided. It mandates that every producer of EE and their components shall ensure their product do not contain lead, mercury and other hazardous, ये देखना, ये वाले प्रोडक्ट नहीं हो सकते, ये नाम याद रखना, lead, mercury, other hazardous substances beyond prescribed concentration. Next, amendment to food safety regulations. आओ इसे देख लेते हैं. So, Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI, हर पैकेट फूड पे तुम लोगों ने इनका लोगो देखा होगा, has amended Food Safety and Standard Food for Infant Nutrition Regulation 2020. ये infant nutrition है, इसको ध्यान रखना. एक मिनट, मार्क हो जा. Regulation 2020, FIN regulations, and Food Safety and Standard Packaging Regulation 2018, packaging regulations. These amendments inter alia provide the provisions relating to increase in the maximum limit of vitamin B12 in infant formula under FIN regulation and addition of antimony and PHTH phytalic acid on the, sorry अगर इसका मेरा pronunciation गलत है, PHTHALIC P शायद साइलेंट होगा ना, PH थैलिक एसिड होना चाहिए, है ना, PH साइलेंट है. पहली बार मैंने ऐसा वर्ड देखा जिसमें दो अक्षर साइलेंट है. इन द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर, छोड़ो आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक माइग्रेशन लिमिट्स फॉर substances from plastic material intended to be used in contact with the articles. So ठीक है. Latest developments in science and technology, information technology, computer and space. देखें, Honorable Prime Minister of India and Singapore launched real-time payment system linkage between the two countries. ठीक है. सिंगापुर के कौन है? Mr. Lee Hsien Loong on February 21, 23 witnessed the launch of cross-border linkage between India and Singapore using their respective fast payment system UPI and PayNow. The UPI PayNow linkage will enable users of the two fast payment system in either country to make convenient, safe, instant and cost-effective cross-border fund transfer using their respective mobile apps. Fund held in bank account or e-wallets can be
transferred to from India using just the UPI ID, मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। सिंगापुर जाओगे तो आप, या सिंगापुर वाले यहां पे आएंगे तो आप ट्रांसफर आराम से कर सकते हो। फिर गूगल लॉन्चेस एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हैं, तो इन चीजों को, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो हो रही है उनको करप्ट करने के लिए गूगल Jigsaw subsidiary is launching a new anti-misinformation project in India aimed at preventing misinformation, misleading information that has been blamed for inciting violence, a top executive said. Indian government officials have called on tech companies such as Google, Meta, Twitter to take stronger action against the spread of fake news. Ministry of Information and Broadcasting, I&B, has repeatedly invoked extraordinary powers to block YouTube channels and some Twitter and Facebook accounts allegedly used to spread harmful misinformation. ठीक बात है। Government launches डिजी यात्रा फैसिलिटी एट 3 एयरपोर्ट। ये तो इनफैक्ट मैंने भी यूज किया। क्या है कि भैया आप पहले ही अपना आधार बेस्ड या डिजी लॉकर बेस्ड से लॉग इन कर लो, और जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन और एयरपोर्ट पे घुसने के लिए लाइन होती है, उसकी जगह आप उन्होंने ये मशीन लगा रखी है, उस पर स्कैन करेगा और सीधा सीधा अंदर चले जाओ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आपको अपने डॉक्यूमेंट, फ्लाइट कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है, सब इसमें ऑलरेडी आ जाता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया launched Digi Yatra from the Indira Gandhi International Airport, New Delhi, for 3 airports in the country, namely New Delhi, Varanasi and Bengaluru. मैंने न्यू दिल्ली पे भी यूज किया और बेंगलुरु पे भी इसको यूज किया। Digi Yatra is conceived to achieve contactless, seamless processing for passengers at airport based on facial recognition technology, और ये जरूर काम किया। Digi Yatra in the first phase will be launched at 7 airport. However, it has been initially launched at 3 airport, Delhi, Bangalore, Varanasi, to be followed by 4, namely Hyderabad पे भी काम किया, मैंने यूज किया है, Kolkata, Pune, Vijayawada by March 23. Later, it would be implemented across various airports in the country. The service is presently being launched for domestic flights, passengers only. Digi Yatra app is available both on iOS and Android. It is voluntary in nature. With Digi Yatra, India is setting new global benchmarks for seamless, hassle-free and health risk-free process at airport. फिर गूगल ने क्या किया? Google rolls out पास की सपोर्ट इन क्रोम फॉर बेटर सिक्योरिटी। हाँ जी, अब ये भी मैंने इनफैक्ट कल परसों हुआ था। मेरे पासवर्ड की जगह जरूरत नहीं है, आप एक पास की बनवा सकते हो, उसको डालोगे पासवर्ड की जगह, वो काम करेगा। Tech giant Google has started to roll out passkey support in Chrome with the stable M108 version for better safety. Passkeys are for safer replacement for password and other phishable authentication factors. The tech giant said in a big blog spot, they are more secure as they cannot be reused, do not leak in the server breaches and protect user from phishing attack. Phishing पता है ना क्या होता है? पासवर्ड चोरी हो जाता है, फिर लोग पैसा वैसा मांगने लग जाते हैं। IIT Roorkee and AIIMS Delhi develop Swasth Garbh app for pregnant women. Under the Prime Minister Swasth Bharat Mission, researchers at IIT Roorkee have developed a new application for pregnant women called Swasth Garbh. The new app is designed to provide antenatal care and real-time medical support to pregnant women. While there are a lot of apps to help women during pregnancy, most of these provide only pregnancy related to information and lack the involvement of professional clinicians. In contrast, Swasth Garbh is the first pregnancy app that gives user access to a doctor when needed. ये important है. Excuse me. First pregnancy app, क्या नाम है? Swasth Garbh, to a doctor when needed, available for free on the Google Play Store. The app can assist pregnant women with hospital visits by reminding them when they are due and what tests they have to go through, and supports various languages. Amazing step. फिर 5G launch क्या यूज करना चालू कर दिया है श्री नरेंद्र मोदी, while launching 5G services in Pragati Maidan, New Delhi on October 1, 2022, said the New India will not remain a mere consumer of technology, but India will play an active role in the development and implementation of the technology. India will play a big role in designing the future wireless technology.
and manufacturing related to it. The Prime Minister pointed out that India was dependent on other countries for 2G, 3G and 4G technologies. But with 5G, India has created a new history. With 5G, India has created a new history. With 5G, India is setting global standards in telecom technology for the first time. 5G technology will offer a wide range of benefit to the common people. It will help in providing seamless coverage, high data rate, low latency, and highly reliable communications. Also, it will increase energy efficiency, spectrum efficiency, and network efficiency. 5G technology will help in connecting billions of Internet of Things devices, जैसे Alexa, Google Mini, will allow higher quality video services with mobility at high speed, delivery of critical services such as telesurgery, autonomous cars, among others. 5G will help in real-time monitoring of disasters, precision agriculture, in minimizing the role of humans in dangerous industrial operations such as deep mines, offshore activities, etc. Unlike existing mobile communication networks, 5G network will allow tailoring of requirement for each of these different use cases within the same network. फिर इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, इसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस डेवलप्ड बाय KPIT CSI in Pune was unveiled by Shri Jitendra Singh, Union Minister of State for Science and Technology on August 21, 2022. In fact, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर में भी इसके बारे में बात की थी. The hydrogen fuel cell uses hydrogen and air to generate electricity, producing only heat and water in the process. Hydrogen fuel cell, like the one present in the bus, produce electricity by combining hydrogen and oxygen atoms. The two gases react across an electrochemical cell similar to conventional battery cell to produce electricity, water and small amount of heat. This electricity is used by electric motors to propel the vehicle forward. Next, देखें. So, government mandates registration of IMEI number for all mobile phones before sale in India starting 23. मतलब बिना IMEI के अब कोई भी मोबाइल नहीं मिलेगा. The government has mandated the registration of IMEI numbers for all mobile phones mandatory before their sale in India on its anti-counterfeit and lost handset blocking portal from January 1, 2023. According to a notification dated September 26, all mobile phones, whether made locally or imported, will need to be registered and get IMEI, International Mobile Equipment Identity Number, certificates from the Indian Counterfeited Device Restriction portal that is run by the Department of Telecommunication. So that is it, I believe. So that is it. ये कुछ MCQs हैं जो बेटा आप ऑलरेडी अपने आप कर ही लोगे. आज के वन शॉट ऑन चैप्टर नंबर 4 इज दिस मच. इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर का और वन शॉट बचा रहता है, वो आई विल सी यू गाइज वेरी शॉर्टली. थैंक यू. टेक केयर. कोई भी डाउट हो जरूर पूछना. बाय बाय.